Hello, dears and viewers. Assalamu alaikum. Once again, today I am in front of you, viewers. I pleaded Javed Ali Salro High Court, and only behalf of that to share the essential knowledge of Constitution of Pakistan 1973. Essential because the thing which is written in the textbook of the Constitution of Pakistan 1973, I only just share the thing which is also present in the textbook. सो अगेन एंड अगेन मैं ऐसा आपको बार बार कहता चल रहा हूँ कि ये इसेंशियल नॉलेज है, क्योंकि दीज ऑल वर्ड्स आर नॉट माय ओन वर्ड्स. जो भी वर्ड्स मैं सबमिट कर रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, पेशकश कर रहा हूँ, ओनली आफ्टर व्यूइंग आफ्टर विद द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. आई अगेन एंड अगेन शो दैट to you viewers that you can realize that of course this is the totally strong and essential knowledge, the thing which is present in the textbook of the Constitution of Pakistan 1973. तो चलते हैं अपना जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉल एंड रिफ्रेश योर मेमोरी फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टडी कि हम इस वक्त जो है पार्ट 5 की स्टडी कर रहे हैं. पार्ट 5 के जो चैप्टर्स हैं वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया. सेकंड चैप्टर जो अपना आर्टिकल 152 वो आखिरी आर्टिकल था सेकंड चैप्टर ऑफ पार्ट 5 का. तो अभी हम मूव ऑन हो रहे हैं जो है चैप्टर 3 की तरफ. पार्ट 5 से मैं चैप्टर 3 के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ. This is also mandatory, and of course total constitution is very good and very mandatory for learning. So keep it touch with me to listen thoroughly whatever written in the textbook of the Constitution of Pakistan. I only rely on that, and delivery of the textbook according to my this is not my own words, according to words of the Constitution. I just only deliver to realize you that of course this is the essential knowledge of the textbook of the Constitution of Pakistan 1973, which is mother of all the laws. तो चलते हैं अपना चैप्टर 3 की तरफ जो कि पार्ट 5 में अवेलेबल है. तो एंजॉय करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए लेट्स मूव टुगेदर विद मी. सो चैप्टर 3 स्पेशल प्रोविजंस. चैप्टर 3 स्पेशल प्रोविजंस हैं. अच्छा, 152A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि ओमिटेड है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फर्दर मोर 153 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 153 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर रिफर्ड टू एज द काउंसिल टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. Sub article 2 of article 153, the council shall consist of class A, the prime minister who shall be the chairman of the council. काउंसिल के बारे में बताया जा रहा है कि काउंसिल जो है किस पे कंसिस्ट कर रहा है. तो क्लास ए में जैसे कि लिखा गया है द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो काउंसिल का क्या होगा, चेयरमैन होगा. क्लास ए बता रहा है जो कि अपना आर्टिकल 153 के सब आर्टिकल 2 का क्लास ए है, वो बता रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल का चेयरमैन होगा. एंड क्लास बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस भी है. एंड क्लास सी 3 मेंबर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम. 3 जो है अपना मेंबर होंगे जो है फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी उनको अपना फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द प्राइम मिनिस्टर. ओके, फर्दर मोर सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 153 दिस इज omitted, and sub article 4 of article 153 is here with the council shall be responsible to Majlis Shura Parliament and shall submit an annual report to both houses of Majlis Shura Parliament. बोथ हाउसेज आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2 हाउसेज हैं जो कि नेशनल असेंबली है और अपना सेनेट है. ये बोथ हाउसेज उसका जिक्र हो रहा है ऑफकोर्स मजलिस शूरा पार्लियामेंट में जो हम पढ़ के आए हैं. तो वेल मजीद चलते हैं आगे अपना कुछ निखार हासिल करने के लिए. तो आर्टिकल 154 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का. फंक्शंस एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर. सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 154 the council shall formulate and regulate policies relation to matters in part 2
ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ऑफ कोर्स पार्ट 2 हम पढ़ के आए हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में पढ़ा है, एंड शेल एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। कुछ अपना वो भी इसमें तहरीर शुदा है जो हम पढ़ के आए हैं, तो वो रिकॉल भी हो रहा है ऑफ कोर्स। तो ये अपना सब आर्टिकल 1 था 154 आर्टिकल का। तो चलते हैं सब आर्टिकल 2 154 आर्टिकल की तरफ। द काउंसिल शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन 30 days ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस। फिर भी देखें ओथ आ गया, सिंपल लिखा हुआ है 30 days में अपना बिफोर एंटरिंग ओथ ऑफ ऑफिस। ओथ आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओथ आ जाए तो आपको रिकॉल होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए माइंड में कि ओथ इट मीन्स प्रेजेंट इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। Well, moving towards sub-article 3 of article 154, the council shall have a permanent secretarial and shall meet at least once in 90 days, provided that the Prime Ministry may convene a meeting on the request of a province on an urgent matter. Good. Sub-article 4 of article 154. The decisions of the council shall be expressed in terms of the opinion of the majority. Sub-article 5 of article 154. Until Majlis Shura Parliament makes provisions by law in this behalf, the council may make its rules of procedure. Sub-article 5 of article 154. Until Majlis Shura Parliament makes provisions by law in this behalf, the council may make its rules of procedure. जैसा कि पहले भी मैंने बताया। सब आर्टिकल 6 ऑफ आर्टिकल 154, Majlis Shura Parliament in joint sitting may from time to time by resolution issue directions through the federal government to the council generally or in a particular matter to take action as Majlis Shura Parliament may deem just and proper, and such directions shall be binding on the council. Okay. Sub-article 7 of article 154, if the federal government or a provincial government is dissatisfied with a decision of the council, it may refer the matter to Majlis Shura Parliament in a joint sitting whose decision in this behalf shall be final. Okay, ये decision जो होगा क्या होगा, final होगा। तो चलते हैं आर्टिकल 155 की तरफ। Complaints as to interference with water supplies. ओके, कंप्लेन है इंटरफेरेंस जो वाटर सप्लाई की होगी, उसमें अपना 155 आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है। वाटर सप्लाई के हवाले से जो कंप्लेंट्स होंगे, इंटरफेरेंस होंगी, वो वाटर सप्लाई की 155 में आती हैं। सब आर्टिकल 1 ऑफ आर्टिकल 155, if the interests of a province, the federal capital or the federally administered tribal areas or any of the inhabitants thereof in water from any natural source of supply or reservoir have been or likely to be affected prejudicially by class A, any executive act or legislation taken or passed or proposed to be taken or passed, or class B, the failure of any authority to exercise any of its powers with respect to the use and distribution or control of water from that source, the federal government or the provincial government concerned may make a complaint in writing to the council. Sub-article 2 of article 155. Upon receiving such complaints, the council shall, after having considered the matter, either give its decision or request the president to appoint a commission consisting of such persons having special knowledge and experience in irrigation, engineering, administration, finance or law as he may think fit, thereafter referred to as a commission. क्लियर अपना लिखा हुआ है कि जैसे ये कंप्लेन रिसीव हो, अपना काउंसिल जो है कंप्लेन रिसीव करने के बाद उस पर कंसिडर करेगी उन मैटर्स पे कि ये डिसीजन जो है ऑन रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट को अपना भेजा जाए, कि ताकि अपना वो अपॉइंट कंसिस्ट करे पर्सनस को जो स्पेशल नॉलेज रखते हो इरिगेशन की, इंजीनियरिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंस और लॉज की, तो उसको ये अपना रेफर किया जाए कमीशन, प्रेसिडेंट को ये अपना रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है। फर्दर मोर, सब आर्टिकल 3 ऑफ आर्टिकल 155,
until Majlis Shura Parliament makes provisions by law in this behalf. The provisions of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956 is in force immediately before the commencing day shall apply to the council or the commission is if the council or the commission were a commission appointed under that act to which all the provisions of section 5 thereof applied and upon which the power contemplated by section 10A thereof had been conferred. Subarticle 4 of Article 155. After considering the report and supplementary report, if any, of the Commission, the Council shall record its decision on all matters referred to the Commission. Subarticle 5 of Article 155, notwithstanding any law to the contrary, but subject to the provision of Clause 5 of Article 154, it shall be the duty of the federal government and the provincial government concerned in the matter in issue to give effect to the decision of the Council faithfully according to its terms and tenor. Subarticle 6 of Article 155. No proceeding shall lie before any court at the instance of any party to a matter which is or has been in issue before the council or of any person whatsoever in respect of a matter which is actually or has been or might or ought to have been a proper subject of complaint to the council under this article. Article 156. National Economic Council. Subarticle 1. The President shall constitute a National Economic Council which shall consist of Class A. The Prime Minister who shall be the Chairman of the Council. Class B. The Chief Minister and one member from the province to be appointed, nominated by the Chief Minister, and Class C. 4 other members as the Prime Minister may nominate from time to time. Subarticle 2nd of Article 156. The National Economic Council shall review the overall economic conditions of the country and shall, for advising the federal government and the provincial government, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans it shall, amongst other factors, ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in chapter 2nd of part 2nd. Subarticle 3 of Article 156. The meeting of the council shall be summoned by the chairman or on a requisition made by on behalf of the members of the council. Subarticle 4. The council shall meet at least twice in a year, and the quorum for a meeting of the council shall be 1/2 of its total membership. Subarticle 5 of Article 156. The council shall be responsible to the Majlis Shura Parliament and shall submit an annual report to each house of Majlis Shura Parliament. Each house, it means both house. Now Article 157, very important. मैंने भी अपना एक सीपी चलाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ सिंध में, डीबी में चलाई थी अपना इसी आर्टिकल 157 का ज़रूर मैंने अपना रेफरेंस दिया था अपना बिफोर दी बेंच के मैंने अपना सीपी चलाई थी अपना कराची इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट में गया था क्योंकि मैं पिटिशनर था जाहिर है, और अलहमदुलिल्लाह वो मैंने डिस्पोज कराई है, तो उसका चलो अपना पढ़ लेते हैं, आपको भी मैं बताता हूँ. Article 157, electricity. Subarticle 1. The federal government may in any province construct or cause to be constructed hydroelectric or thermal power installation or grid stations for the generation of electricity and lay or cause to be laid inter-provincial transmission lines, provided that the federal government shall, prior to taking a decision to construct or cause to be constructed hydroelectric power stations in any province, shall consult the provincial government concerned. Subclass 2 or subarticle 2. The government of a province may, class A, to the extent electricity to supply to that province from the national grid, inquire supply to be made in bulk or transmission and distribution within the province. ये जो है प्रोविंस
कि हर प्रोविंस में इनको जो है बल्क कैटेगरी में जो है अपना सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी, सब आर्टिकल 2 ऑफ आर्टिकल 157 के क्लास ए में। और क्लास बी आ रहा है लाइवी टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द प्रोविंस। क्लास सी construct power houses and grid stations and lay transmission lines for use within the province. And class D determine the tariff for distribution of electricity within the province. और सब आर्टिकल 3 of article 157 which is about electricity. In case of any dispute between the federal government and the provincial government in respect of any matter under this article, any of the state governments may move the council of common interest for resolution of the dispute. Very amazing article of constitution about the electricity, because electricity, this is also the right of all citizens of Pakistan wherever they are in Pakistan. So article 158 priority of requirement of natural gas, पहले वाटर का हमने पढ़ा 156 में, फिर अपना 155 में, फिर अपना जो है अपना 157 में इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ा, 158 में अभी जो है नेचुरल गैस का पढ़ने जा रहे हैं। The province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirement from that wellhead, subject to the commitment and obligations is on the commencing day. Now we are moving towards 159 article, which is about the broadcasting and telecasting. Good. The federal government shall not unreasonably refuse to entrust to a provincial government such functions with respect to broadcasting and telecasting as may be necessary to enable that government. Class A to construct and use transmitters in the province, and Class B to regulate and impose fees in respect of the construction and use of transmitters and the use of receiving apparatus in the province, provided that nothing in this class shall be construed as requiring the federal government to entrust to any provincial government any control over the use of transmitters constructed or maintained by the federal government or by persons authorized by the federal government, or over the use of receiving apparatus by persons so authorized. Sub-article 2. Any function so entrusted to a provincial government shall be exercised subject to such conditions as may be imposed by the federal government, including, notwithstanding anything contained in the constitution, any conditions with respect to finance, but it shall not be lawful for the federal government so to impose any conditions regulating the matter broadcast or telecast by or by authority of the provincial government. Sub-article 3. Any federal law with respect to broadcasting and telecasting shall be such as to secure that effect can be given to the foregoing provisions of this article. Sub-article 4 of article 159. If any question arises whether any conditions imposed on any provincial government are lawfully imposed, or whether any refusal by the federal government to entrust functions is unreasonable, the question shall be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan. Sub-article 5 of article 159. Nothing in this article shall be construed as restricting the powers of the federal government under the Constitution for the prevention of any grave menace to the peace or tranquility of Pakistan or any part thereof. तो पार्ट 5 के जो 3 चैप्टर थे वो इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आप ने जो है समझा होगा। इसमें जो आर्टिकल तो वैसे सारे मैंडेटरी और वेरी यूज़फुल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मैं जो प्रेफरेंस दूंगा आर्टिकल जो मुझे अपना सूदमंद भी लगे और जो मेरी प्रैक्टिस में भी अपना शुमार है, वो है अपना आर्टिकल 155 जो कि अपना
वाटर के हवाले से है, वाटर सप्लाई के हवाले से है, और 157 155 वाटर सप्लाई के हवाले से है, 157 जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, जैसे कि मैंने सीपी भी चलाई जो कि आपको मैंने हवाला भी दे दिया है, और फिर उसके बाद 158 है, 158 जो नेचुरल गैस के हवाले से है, 159 है ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सो रिमेंबर इट एंड आप भी गो थ्रू कीजिएगा। अगर इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू मे आस्क फ्रॉम मी बाय कमेंट, वट एवर यू हैव द ग्रीवेंस यू मे शेयर प्लीज काइंडली, दैट मैं उसको मॉडिफाई कर सकूं। एंड पार्ट 5 जो है इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाने वाले हैं जो कि अपना फर्दर लेक्चर होगा। सो वेट फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।